stuck in my brain. We never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know.
up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Looking back at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. कि अगर आप इस बेड पर एक बार सो गए तो आप और बेड तो भूल ही जाएंगे और बस स्विच ऑफ करते ही ये बेड अपने आप फोल्ड होकर एक हल्की वजन का सूट बेड बन जाता है। और इस बेड को खरीदने के लिए आपको 8 से 10 हजार रुपए देने होंगे। स्मार्ट शेल्फ्स, दोस्तों स्मार्ट शेल्फ्स को इस तरह बनाया गया है, देखने वाले को ये एक सिंपल अलमारी लगेगी, लेकिन जब इस अलमारी को घुमाया जाता है तो इसके पीछे एक कमरा छुपा होता है और पीछे की तरफ भी स्मार्ट शेल्फ्स में एक अलमारी होती है जिसमें आप अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम का किसी को पता ना चले तो आप अपने फर्नीचर के कारीगर से ये स्मार्ट शेल्फ्स बनवा सकते हैं। बेड की डेस्क, दोस्तों इस अलमारी पर आपको 2 टेबल मिलती हैं जिन पर आप कोई भी चीज रख सकते हो। आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर का वर्क कर सकते हो और इन दोनों टेबलों को साइड में करने के बाद आप जब इस अलमारी को खोलोगे तो आपको बड़ा सारा टेबल मिलेगा जो इसके आगे पीछे बड़ी टेबल इससे बड़ा खूबसूरत लगता है। सोफा बेड, दोस्तों इस सोफे से बने इस अलमारी को करते हैं ये अलमारी एक का ले लेती है। दोस्तों जब मेहमानों को नाश्ता कराना होता है सोफे पर बैठा दिया जाता है और जब सोना होता है तो पेड़ को नीचे कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक छोटे से रूम में अलमारी, सोफा और एक डबल बेड आ जाता है। वॉल फोल्डिंग बेड, दोस्तों घर में जगह कम होने की वजह से आप दीवार में भी बेड को सो जाए ऐसा बेड बनवा सकते हैं। आप जैसे ही इस सीढ़ी को खींचोगे तो एक सिंगल बेड दीवार के अंदर से निकल आएगा। इसी तरह की कम जगह को देखते हुए दीवार में 2 सिंगल बेड फिक्स हो जाते हैं और अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आप इस दीवार
बेड घर के अंदर जरा सी भी जगह नहीं लेता है, क्योंकि इस बेड को इस तरीके से बनाया गया है कि छत में छिप जाने के बाद ये बेड एक बहुत ही सुंदर पीओपी का डिजाइन लगता है और फिर आराम के वक्त इस बेड को नीचे भी आराम से उतारा जा सकता है और ऊपर जाने के बाद ये बेड ऐसा लगता है कि मानो इस पर बहुत ही उम्दा डिजाइन बनाया हुआ है। अप एंड डाउन फोल्डिंग टेबल। दोस्त, इस टेबल को हम घर के किसी भी कोने या किचन में खड़ी करके एक अलमारी की तरह यूज कर सकते हैं और जब मेहमान आए तो ये अलमारी से एक टेबल का रूप ले लेती है। द हैबिट फर्नीचर। ये कमाल की टेबल कई तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। इस टेबल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप घर पर ही इस टेबल की मदद से कई तरह के वेट लॉस एक्सरसाइज कर सकते हो। और इस टेबल के साथ आपको लकड़ी के भारी कंबल भी मिलते हैं जिनकी मदद से आप स्टेप लगा सकते हो, बाइक और राइड एक्सरसाइज कर सकते हो। और इस टेबल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेबल सोफे के अंदर जिम का सभी सामान आसानी से छुपाया जा सकता है और इस तरीके से जिम का सामान घर के अंदर जगह भी नहीं लेता है। आप कंपनी से अपनी मनपसंदीदा कोई भी जिम मशीन बनवा सकते हैं जिससे कि वो मशीन आसानी से फोल्ड होकर सोफे के अंदर फिट हो जाए और आप सोफे को भी बैठने के तौर पर यूज कर सकते हो। स्मार्ट टेबल एंड चेयर। दोस्तों, ये टेबल इतनी स्मार्ट है कि अपने अंदर एक कुर्सी तक को छुपा लेती है और साइड से इस टेबल को पूरा खोलने के बाद इस टेबल पर एक आदमी आराम से अपने लैपटॉप का वर्क कर सकता है और पूरा वर्क करने के बाद उसे ये टेबल भी फोल्ड हो जाती है और इसके अंदर छुप जाती है और छोटी सी स्मार्ट सोफा। सोफे को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो हिस्सों के रूप में बदला जा सकता है और इसके फोल्डिंग टेबल भी होता है। और इसके अलावा